Hi everyone. Today we have Jaydeep on our channel. You must have seen Jaydeep on some of our recent YouTube lives, and hope all those lives was helpful. Today we are going to talk a little about Jaydeep's personal journey in detail. So Jaydeep, firstly, welcome to the channel again. And can you tell the aspirants and the viewers a little about your background and your story? Yeah, thank you, Aditya, for having me here. Hello, everyone. So, talking about my background, I completed my BSc, majoring in statistics from KC College in back in 2021. After that, like for a year, I worked in product management in one edtech, and then after in a fintech firm. Then I realized ki I want to, improve my business skills. I want to go for an MBA to get better opportunities to grow in my career. So that's when I started ki completely focus on the MBA entrance examinations. I also gave CAT, IFT, and XAT examinations as well. But my primary focus was on CET because first attempt I gave that I had around 93.69 percentile. That was back in 2021. So then I appeared again in year 2022. Then I had 99.36 percentile. So at that point, I realized that I can push a little more and get into the one of the top B school into of the country, right? So in the last attempt, I had 99.88 percentile, and here I am at JBIMS. Got it. Got it. Firstly, congratulations on that. Uh, So is there anything unique you think about your journey या ऐसे कुछ challenge that you've uniquely faced that you would like to talk about? हाँ श्योर सो कैसा था कि व्हेन आई स्टार्टेड माय एमबीए थॉट ऐसा था कि व्हेन आई completed my graduation I realized that there is a very asymmetry in opportunities that are you are exposed to, and kind of personality, the skill set that you get from other colleges and from one of the top B schools or other people that graduate from topmost institutions. They have some a different kind of abilities if in case of whatever they are going to in their professional lives, and how they are going to handle things down the line in their career. So preparation wise, I started preparing when I was under graduation only कि मुझे एक अच्छे एमबीए कॉलेज में एडमिशन लेना है. सो Right. एक अटेम्प्ट के बाद भी आई कुड गेट इनटू वन ऑफ द गुड कॉलेजेस, बट आई रियलाइज कि मुझे और थोड़े एफर्ट्स डालना पड़ेगा द टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स दैट आई हैव इन माय माइंड, कि दैट गोइंग टू मैटर 5 years 10 years डाउन द लाइन, कि एग्जैक्टली करियर के मैं कौन से स्टेज पे हूँ. सो दैट वाज माय थॉट बिहाइंड गिविंग 3 years for the MBA entrance examination. Got it. तो ये I mean very good observation and बहुत ही important point है. इंडिया में जो भी टॉप जॉब्स है कॉर्पोरेट में इट्स वेरी फ्यू. तो ऑल दोज अपॉर्चुनिटीज अंडरग्रेड में तो इट्स वेरी लिमिटेड टू योर आईआईटीज. कॉमर्स के टॉप कॉलेजेस है ऑब्वियसली एसआरसीसी ये सब दिल्ली में जो है बहुत उधर ही अपॉर्चुनिटीज मिलती है. एंड देन जो पोस्ट ग्रेड की अपॉर्चुनिटीज है द गुड वंस मतलब टॉप कंसल्टिंग एफएमसीजी ये सब जॉब्स है. Everything is very concentrated in the top B schools. So obviously, not I don't know if it's really fair unfair. ऐसा भी है कि obviously talent is across the country in many B schools, but this is the truth अभी. So that's a very good point. So if anyone is looking for say the top cream jobs, वो अपॉर्चुनिटीज कैंपस पे लाइक इजीली एक्सेसिबल सिर्फ टॉप बी स्कूल के कैंपस पे है इफ यू ऑलरेडी डन योर अंडरग्रेड. तो दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट. बट थोड़ा और डीप जाते हैं. बाय डे टू डे व्हाट वाज योर मोटिवेशन फॉर ऑलमोस्ट 3 years कि टॉप बी स्कूल ही जाना है? मतलब एक ठीक है वन इज तो यू सेड कि टॉप जॉब में जाना है उसके देयर इज सम प्रेस्टीज एसोसिएटेड विद दैट. But for 3 years, how do you keep yourself motivated as a daily? Uh, Yeah. Tell us So about that. डेफिनेटली. सो ऐसा होता था कि माय प्राइमरी मोटिवेशन वाज लिंक्डइन, कि मैं लिंक्डइन पे जाता हूँ, मैं जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ता हूँ, और एनीवन हु इज गोइंग टू राइट, कोई पोस्ट लिखता है, कोई मटेरियल, कोई कंटेंट लिखता है. सो वहां पे क्रेडेंशियल्स का गेम बहुत ज्यादा चल रहा था कि इफ आई Right. एम रीडिंग सम जॉब डिस्क्रिप्शन, लाइक आई हैव वर्कड इन प्रोडक्ट मैनेजमेंट डोमेन. प्रोडक्ट मैनेजमेंट के जॉब डिस्क्रिप्शन में भी दे यूज्ड टू मेंशन कि टीयर वन ग्रेजुएट फ्रॉम पोस्ट ग्रेड फ्रॉम टीयर वन इंस्टीट्यूशन, यू नीड IIM IIT ISB काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. सो जो एक्सपोजर आई रियलाइज कि मेरे लिए वो एक ऐसा गेट बन चुका है कि आई वांट
आई वॉन्ट टू एंटर थ्रू दैट गेट, मुझे एक एटलीस्ट एक अपॉर्चुनिटी चाहिए खुद को प्रूव करने की। सो दैट वॉज माई मोटिवेशन कि एटलीस्ट मुझे वो अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल बनना है। आई वॉन्ट टू बी केपेबल कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी, एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले वेर आई कैन पुट माई फुट फॉरवर्ड। तो मेरा वो थॉट वही था कि आई वॉन्ट टू बी, नो, सब मुझे एक अच्छे एंगल से परस्यू करे एंड दे कैन गिव मी अ चांस फॉर माई एबिलिटीज। गॉट इट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसा नहीं है कि तुम कोई आईएम या जेबीएमएस या एसपी या एक्सएलआरआई में अगर तुम जाओ तुम्हें जॉब पक्का मिले, ये भी आई क्लियर दैट फॉर द एस्पिरेंट, ऐसा तो नहीं है। इट इज जस्ट कि यू आर एलिजिबल फॉर दोज अपॉर्चुनिटीज एंड पीपल विल evaluate you, look at your profile, look at your skills and give you a chance। तुम्हें फाइनली जॉब तो स्किल्स और तुम्हारे स्किल्स पे ही मिलने वाला है, वॉट एवर द डिफरेंट स्किल्स आर देयर। बट वॉट these colleges do are give you access to these opportunities। तो तुम्हारा बैकग्राउंड कुछ भी हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल जेबीएमएस में इतने कॉम्पिटिशन्स है, उसमें तो कोई कुछ बैकग्राउंड नहीं पूछता। इफ यू आर इन these top colleges you get a chance to participate in these competitions। In these competitions if you solve a business problem for a company या you impress the company executives, you directly get a job offer, right? This is very again limited to top IIMs, top B schools। So why है, you won't get a job immediately। You it is only based on your skills, but you do get a lot of opportunities throughout your 2 years to get these top jobs। That's a very good point again। Now थोड़ा focus CET पे लेके आता है, because you know it's almost 2 to 3 weeks to CET। Let's start with talking about what was your weakest section and how did you tackle that? Okay. So weaker section I feel was LR and DI primarily. Reason being that कि मैंने पहले जो CAT या अदर एग्जामिनेशन में प्रिपेयर किया था, फॉर क्वांट एंड वर्बल द फाउंडेशन वाज क्लियर कि एक सेट ऑफ स्ट्रक्चर से तुम्हें जाना है, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। बट सॉल्विंग LR पजल्स, दैट वाज कम्प्लीटली न्यू गेम फॉर मी, कि तुम्हें केसलेट्स एक अलग तरीके से इंटरप्रेट करने हैं, देयर इज सम फ्रेमवर्क यू हैव टू फॉलो। कोई अरेंजमेंट का क्वेश्चन हो गया या एनी मैट्रिक्स बेस्ड और any logical reasoning, Right. let's say syllogism such as that। तो ऐसा है कि you can't directly go with the concepts, तुम्हें उसके जो टिप्स एंड ट्रिक्स जो पता होने चाहिए, that is crucial when you want to solve questions under 1 minute or so। तो LR would be, LR and DI were my weakest sections, क्योंकि वहां पे even though I knew the concepts, मुझे वो जो टिप्स एंड ट्रिक्स थे वो नहीं पता होते थे। सो इन दो सेक्शन आई प्राइमरीली डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट मटेरियल, कि जहाँ पे मुझे टिप्स एंड ट्रिक्स पता होने चाहिए, सच एज मे बी ब्लड रिलेशंस हो गया, वेयर द डायग्राम्स आई कुड ड्रॉ हाउ ऑन द सॉल्विंग ऑफ दोस क्वेश्चन, मे बी इनपुट आउटपुट हो गया। वहाँ पे यू कैन जस्ट राइट एवरी लाइन ऑफ द Right. कैलकुलेशन, you just have to you need to be mentally able to solve some of the steps to get the final answer। तो वो एरिया में आई ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ शॉर्टकट्स एंड मेथड्स। Got it। Okay, so LR was your weakest section। उसमें to tackle that you were just looking at better methods of solving shortcuts। जो भी यस, traditional way है उसको छोड़ के you went for the faster methods। या। Got it। तो फिर and you also gave this was your third attempt when you cracked JBIMS। तो what overall changed? Is it just कि LR में you improved तो you know you got through and got a score above the cutoff? कि there were other aspects also to your preparation that changed in the last attempt? हाँ, तो ऐसा था कि ओवर द नो टाइम ऑफ सीईटी, सीईटी का भी स्ट्रक्चर काफी चेंज हुआ है। लाइक Right। अर्लियर इट यूज्ड टू बी सेक्शनल वाइज, कि तुम्हारे पास क्वांट का सेक्शन है, एलआर का सेक्शन है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। सो Got माय द स्ट्रेटजी कुड हैव बीन कि तुम पूरा क्वांट कंप्लीटली सॉल्व करो इन सर्टेन टाइम फ्रेम, देन यू कुड मूव ऑन टू अनदर सेक्शन। But like recently what happened is every mock or every test that I have appeared was completely jumbled। तो एक क्वेश्चन के बाद व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू गेट, आई वाज नॉट अवेयर अबाउट इट। सो जो ओवरऑल इम्प्रूवमेंट था, दैट उसमें जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का पार्ट था, दैट वाज न्यू फॉर मी इन द लास्ट अटेम्प्ट, कि फ्रॉम क्वांट जंपिंग राइट, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कुड बी ऑफ वीए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कुड बी ऑफ एआर। तो तुम्हारे जो माइंड में जो मेथड ऑलरेडी चल रहा है, मे बी यू फॉर अ मोमेंट यू कुड बी सॉल्विंग फास्ट, नॉट रिसाइटिंग टेबल, नेक्स्ट मोमेंट पे तुम्हें मीनिंग ढूंढना है कोई वर्ड का,
राइट। तो जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का पार्ट रहता था दैट वाज क्वाइट डिफरेंट व्हेन आई नो वर्कड इन माय लास्ट अटेम्प्ट। तो वो जो टाइम एफिशिएंसी मुझे अचीव करना था, आई थिंक दैट इनेबल्ड मी टू मैक्सिमाइज माय स्कोर। ठीक है, इन योर प्रिपरेशन डिड एनीथिंग चेंज? स्ट्रैटेजी का यू टॉक्ड अबाउट कि वो चेंज हुआ बिकॉज सीईटी आल्सो केप्ट चेंजिंग। इन योर प्रिपरेशन जर्नी डिड एनीथिंग चेंज? कुछ अलग किया तुमने इन योर प्रिपरेशन जर्नी इन योर लास्ट ईयर? हाँ, so compared to other sections, particularly in quants actually, तो कोई भी क्वेश्चन आता था, अर्लियर आई कुड जस्ट राइट एवरी क्वेश्चन, मतलब एक एक स्टेप लिख के करता था। बट हाँ। लेटर आई रियलाइज कि सम ऑफ द पार्ट नीड्स टू बी हैंडल्ड इन मेंटली। तो जैसे टेबल्स हो गए, मे बी स्क्वायर्स, क्यूब्स, स्क्वायर रूट्स हो गए। सो वो एस्पेक्ट ज्यादा माइंड में रखना, डेली रिवाइज करना, आई थिंक दैट आल्सो हेल्प मी व्हेन improving my score in quant section. So appearing mocks and sectional periodically, that was one part. And again, maximizing my score using like speed calculation methods and overall better methods, formulas, tips and tricks. I think overall मुझे वो boost मिलता था while preparing holistically. ठीक है, वेरी अगेन वेरी गुड पॉइंट। मतलब ये सेकंड्स की बात हो जाती है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट जेबीआईएमएस, इतना कम है द मार्जिन फॉर एरर। एंड आई मीन हम लोग स्टार्टिंग से रेकमेंड करते हैं सब स्टूडेंट्स को कि बहुत टाइम जाता है लिखने में फॉर क्वांट फॉर डीआई। फ्रैक्शंस, टेबल्स, परसेंटेजेस, ये सब एंड फैक्टोरियल्स, ये सब तुम्हें रटने पड़ेंगे इफ यू डोंट नो इट ऑलरेडी, because they save a lot of time. Yeah. Got it. Um, when you look back at your journey, ऐसा कुछ है that you would have changed, ताकि you know maybe second attempt नहीं हो जाता, या anything that you've learned, any mistake that you've done जो aspirants को तुम बोलो कि ये पहले से ही मत करना, I've already made this mistake, at least तुम मत करो ये। Hmm. तो एक डेफिनेटली वन थिंग आई वुड डेफिनेटली चेंज इज दैट स्टार्टिंग सॉल्विंग क्वेश्चंस, प्रायोरिटाइजिंग क्वेश्चन सॉल्विंग। तो ऐसा होता था कि इन अर्लियर अटेम्प्ट्स आई यूज्ड टू फर्स्ट लर्न द कॉन्सेप्ट्स, पूरा मैंने कर लिया एंड आई यूज्ड टू गेट सेंस ऑफ कि मैंने कुछ अचीव किया है। बट टू बी ऑनेस्ट इन ऑन कि वैसा होता नहीं था। अनलेस एंड अनटिल आई कुड सॉल्व, आई नो, एक कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, मुझसे वो हुआ या नहीं हुआ, दैट वुड हैव इन द आइडियल वे कि मुझे मेरी एबिलिटीज कहाँ पे है वो पता चल जाए। तो क्वेश्चन सॉल्विंग आई थिंक वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, कि क्वेश्चन सॉल्व, तुमने कंसेप्ट तो लर्न कर लिया बट देन यू आल्सो नीड टू अप्लाई दोज concepts टू अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, तुमसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे कि नहीं। तो मे बी इन नो लुकिंग बैक, आई थिंक क्वेश्चन सॉल्विंग आई कुड हैव प्रायोरिटाइज मोर इन इवन माय लास्ट अटेम्प्ट, मे बी थोड़ा अर्ली आई कुड हैव स्टार्टेड सॉल्विंग क्वेश्चन, सॉल्विंग सेक्शंस अर्ली ऑन। तो मे बी मेरा स्कोर थोड़ा और इम्प्रूव हो सकता था, बिकॉज एक स्टार्टिंग के मंथ्स में आई इन्वेस्टेड माई टाइम to completing the syllabus, and after that I started solving mocks and sections. Got it, got it. So test taking and solving questions, I think you didn't mention, but under a time limit, right? Yes, क्योंकि under वो a भी time बहुत limit, इम्पोर्टेंट definitely. है। हाँ, तो भाई इट्स वेरी डिफरेंट जब तुम बस सीख रहे हो, यू आर गोइंग थ्रू क्वेश्चंस विदाउट टाइम लिमिट, तुम आराम आराम से सॉल्व कर रहे हो, तुम्हें आ भी रहा है क्वेश्चंस। बट अगेन सीईटी इज अ वेरी स्पीड बेस्ड टेस्ट। as soon as you can, and this is for all aspirants, start taking test sectional हो, topic wise हो, under some time, ताकि तुम्हें उसकी आदत लगते जाए, and so that you can go to mocks as soon as possible. Now my question is कि यार people talk about the competition so much, ठीक है, 1 lakh plus है Hmm. aspirants that take the CET, 1,20,000, 1,30,000, keeps changing, very very few seats for JBIMS, obviously इतना छोटा सा batch size of 150 students only. What was your secret sauce? मतलब क्या, what do you think differentiated you? Hmm. ऐसे क्या सैक्रिफाइस किया, या ऐसे क्या मतलब तुम्हारा टाइम टेबल या डेडिकेशन था, मतलब व्हाट मेड यू बीट ऑल दीज अदर पीपल, राइट? Yeah. सो इसमें भी ऐसा, इसके भी काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बैक इन अक्टूबर 2022 के टाइम पे आई वाज वर्किंग फुल टाइम, एंड वो टाइम पे ऐसा था कि आई वाज नॉट गेटिंग इनफ टाइम फॉर प्रिपरेशन। आई रियलाइज कि मेरे पास काफी कम टाइम बचा है टू गेट माय फाइनल शॉट, बिकॉज एज लाइक 3 एक साल तो मैंने किया था प्रिपरेशन, आई वाज ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग बर्न आउट।
तो ऐसा था कि Right. मेरा प्रिपरेशन भी काफी स्टैग्नेंट हो चुका था। एंड आई सेड कि यार मुझे कंप्लीटली वन शॉट में अभी जो है इस पर या उस पर आई हैव टू गिव माय ऑल इन। तो दैट्स व्हेन आई इन अक्टूबर 2020 आई डिसाइडेड कि आई वांट टू लीव माय जॉब एंड कंप्लीटली प्रिपेयर फॉर सीईटी फुल टाइम। एक ऐसा था कि व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपरेशन आई डिड नॉट हैव एनी क्वेश्चन कि यार Yeah. either I crack the JBIMS or I am going to get big career gap कि मेरे सीवी पे आ जाएगा and that is going to haunt me after my couple of years वैसे। तो एक था कि इस बार तो निकलना ही है। आई कैन लुक बैक, आई कैन लुक एल्सवेयर, आई डिड नॉट हैव एनी बैकअप ऑप्शन। अभी रेट्रोस्पेक्टिवली आई थिंक दैट वाज द रिस्कीएस्ट बेस्ट बिकॉज द सीईटी इज क्वाइट अनसर्टन इन नेचर। तो Right. इट्स सम एलिमेंट ऑफ लक इज ऑल्सो देयर कि मेरे केस में वो गुड फेयरवेल कर गया कि आई कुड हाँ. focus my preparation and at the same time I could crack the institution. But that could have been other case as well कि preparation करके भी पूरा all in जाके भी I couldn't have cracked। तो वो both side का gamble था। Right. Obviously, हाँ, मतलब obviously a lot of students would have left their job and उनका नहीं हुआ. हम्म, मतलब the risk paid off for you might not pay off for everyone. तो I mean for everyone, तुम्हारे circumstances के हिसाब से तुम्हारी जॉब सर्कमस्टांसेस, फैमिली सर्कमस्टांसेस, कौन सा अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट है, थर्ड अटेम्प्ट है या डू और डाई अटेम्प्ट है, वॉट एवर इट इज, उसके हिसाब से ही टेक ऑल दिस इनटू कंसिडरेशन एंड ओनली डिसाइड अबाउट taking such a risk. I obviously cracked the CT with a job. तो सबके लिए बहुत अलग अलग जर्नी है. जयदीप और बाकी JBIMS स्टूडेंट्स ऑब्वियसली यूट्यूब लाइव पे आते रहते हैं. तो इफ यू टेल मोर अबाउट योर सर्कमस्टेंस एंड सिचुएशन, maybe we can also guide you, and if you comment also we can guide you कि what might be the good best decision for you. मतलब कि तुम्हें जॉब छोड़नी चाहिए, गैप लेना चाहिए, सब. बिकॉज for some students जिसका नहीं होता है, sometimes they do end up getting taking 2 year gap, 3 year gap. तो उनका अगर if they want to go back to their job, even that gets a little affected. So again, it's a very very complicated decision, not very straightforward. Very glad that Jaydeep could do it because Jaydeep, if I've not mentioned already, was a TTP student. So we are very happy for him. But for all the others, like try to talk to us, and we can give you some or the other advice based on itne student के experiences on what you should do. So now talking about TTP a little, Jaydeep, you are a TTP student. How did TTP help you in your journey, or what did you like about TTP? हाँ, तो फ्रॉम द स्टार्ट एक ऐसा था कि When did you फॉर join TTP? आई थिंक इन द मंथ ऑफ दिसंबर एंड जनवरी। आई अच्छा. रिमेम्बर आई वाज ऑन द वॉक कि मुझे कहाँ करना है। आई टेक्स्टेड अनय कि आई वांट टू जॉइन टीटीपी, व्हाट इज द प्रोसीजर। टेलीग्राम होता था वो टाइम पे, आई रिमेम्बर। हाँ. सो थॉट ऐसा था कि व्हेन आई वांटेड टू डेडिकेटली गिव माय टाइम फॉर सीईटी राइट, तो कोई भी डेडिकेटेड प्रेप प्रोवाइडिंग मुझे इजीली एक्सेसिबल नहीं था। सो देन आई केम अक्रॉस कि टीटीपी का कोर्स आई थिंक इट वाज क्वाइट नो सुटेबल फॉर मी कि जो काइंड ऑफ ऑफरिंग्स दे वर गिवन इट वाज मोर स्ट्रक्चर्ड टुवर्ड्स फोकस टुवर्ड्स सीईटी ओनली कि तुम्हें Right. सीईटी के अराउंड जो मटेरियल है, कवरेज है, दैट यू कुड गेट इनटू द वन कोर्स। एक मॉक्स हो गए, Yes. सेक्शंस हो गए, इट वाज कंप्लीटली सुटेबल फॉर मी कि मैं एक 4-5 मंथ्स में वो सब मटेरियल कवर भी कर सकता हूँ। एंड आई कुड सी कि ये सब मटेरियल मेरे कैपेबिलिटी में है। इट वाज नॉट लाइक कि बहुत ज्यादा रिसोर्सेस है, इट वाज क्वाइट फोकस्ड फॉर मी। तो ऑन दैट आई डिसाइडेड कि मुझे एनरोल करना है। एंड ओवर द पीरियड आई थिंक जो मेंटरशिप था, लाइक वन ऑन वन कनेक्ट जो होता था, लाइक आई रिमेम्बर टॉकिंग विद श्रीकांत लेट इन द इवनिंग। वो टाइम पे भी ही यूज्ड टू आफ्टर वर्क, आफ्टर हिज वर्क आवर्स, यूज्ड टू टॉक, गिव सम टाइम फॉर मी कि तुमने तुम्हारा प्रोग्रेस कहाँ तक आया, व्हाट आर योर करंट सिचुएशन एंड व्हाट यू कुड इम्प्रूव। साइड बाय साइड में भी लाइक संडे के सेशंस होते थे। सो आई Right. कुड गेट पीयर इंटरेक्शन किया, तुम्हारा स्कोर कहाँ पे, लाइक वेयर आई कैन इम्प्रूव। तो जो इंटरेक्शन होता था, कॉम्पिटिटिवनेस होती थी। सो एवरी एस्पिरेंट हु इज टिपिकली कंप्लीटली फोकस्ड ऑन सीईटी, यू गेट एवरीवन इनटू द वन प्लेस। और जो इंटरेक्शन होता था एक दूसरे के साथ, आई थिंक दैट वाज द यूएसपी और दैट क्वाइट हेल्प मी व्हाइल माय प्रिपरेशन। That's great to hear. And obviously बहुत सारे who were you preparing में तुम्हें याद है कि उसका भी हो गया because overall TTP से तो 17 स्टूडेंट्स हुए.
तो ऐसा कोई स्टडी पार्टनर का भी हुआ, ऐसा कुछ हुआ फॉर यू? यस ऑन द कैंपस आई मेट कपल ऑफ देम कि फर्स्ट दिन अच्छा। पे आए, हम लोग ने एडमिशन ले लिया एंड दे वर लाइक कि यार तुम टीटीपी के ग्रुप में थे ना, आई रिमेम्बर यू, काइंड ऑफ वैसे इंटरेक्शन भी हुआ है काफी जन के साथ। That is great to hear. That is great to hear. Now, obviously, you are a first year student at JBIMS. So, just one last question before we wrap up. How did your life change after getting into JBIMS? Yeah, JBIMS में experience में what surprised you the most? आई थिंक बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करना अभी भी बाकी है, Of बट course. ड्यूरिंग द मंथ्स दैट आई हैव एक्सपीरियंस सो फार इज दैट कि बाहर से एक तुम्हें एक सर्टन सेट ऑफ आइडिया है इंस्टीट्यूशन क्या है, कि इट्स द you have some placement reports, let's say you have faculties का understanding what kind of faculties come to the campus, you have alumni base की alumni कहाँ कहाँ काम कर रहे हो, those kind of Right. things. But once you enter those gates, तुम इंस्टीट्यूट में आते हो, once you become part of it, I think the exposure you get it's quite different. It's on the micro level कि बैच वाले में भी सीनियर्स हो गए, तुम्हारे खुद के पीयर ग्रुप हो गए, दे आर लाइक दे इन्वेस्ट इन यू कि तुम्हें केस कॉम करना है, मे बी यू कैन ऑल्सो गेट रिसोर्सेज, कि तुम्हारे बैच में से कॉम्पिटिटिवनेस आ जाता है, आइडियाज आ जाते हैं। सो जो पीयर ग्रुप मिलता है दैट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स आई कुड से, कि आई केम इनटू द इंस्टीट्यूशन, आई गेट वन ऑफ द बेस्ट पीयर ग्रुप, वो हो जाता है। एंड डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपोजर दैट यू गेट ओवरऑल, वो तुम्हें सीधा बाहर से नहीं दिखता, दैट यू ओनली गेट एक्सपोज वन यू गेट इनसाइड द इंस्टीट्यूशन। सो आई थिंक बेस्ड ऑन दैट डेली मुझे जो हाउ आई कुड पुट इट, कि जो जो एक्टिविटीज मैं करता हूँ, द वे आई Right. डू द असाइनमेंट्स और एनी काइंड ऑफ एक्टिविटीज फॉर द कमिटीज और फॉर द एकेडमिक प्रोजेक्ट्स, तो वो काइंड ऑफ चैलेंजिंग भी होते हैं, एंड आई काइंड ऑफ पुश माई सेल्फ, मुझे वो एक खुद के लिमिट टेस्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। सो आई थिंक द एक्सपोजर यू गेट इट्स ऑन द अनदर लेवल। हाँ, पीएस का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली बहुत स्मार्ट लोग मिलते ही है जेबी में। एंड ड्यूरिंग कॉलेज यू लर्न अ लॉट, असाइनमेंट्स करते हो, प्रोजेक्ट्स करते हो, ये सब साथ में। लाइफ लॉन्ग के लिए ये तुम्हारा नेटवर्क रहने वाला है। दे यू आर ऑल्सो गोइंग टू डू इनक्रेडिबल थिंग्स, कॉर्पोरेट में हो जो भी हो, यू आर गोइंग टू रीच अ वेरी गुड पोजिशन इन योर करियर, इवन दे विल बी रीचिंग वेरी गुड। तो वो नेटवर्क बहुत ही क्रिटिकल है फॉर एनीवन। वेरी सिंपल एग्जांपल, अगर मेरे को जॉब स्विच चाहिए, यू विल हैव 10 of your friends in top companies who will be managers, who will be, you know, in the leadership positions, and who will immediately send your resume to HR, and कुछ भी तुम्हारा इंटरव्यू सीधा हो जाएगा। दैट इज जस्ट वन थिंग। एंड ऑब्वियसली बाकी कुछ भी इतने इंसाइट मिलेंगे तुम्हें कोई भी इंडस्ट्री से। योर फ्रेंड्स विल बी इन द बैंकिंग इंडस्ट्री, कोई फार्मा इंडस्ट्री में होगा। there's going to be so much to learn, to come on our channel for YouTube lives to just guide students for CET in a very critical phase. And all the best for your summer internship, for another year at JBIMS. And all the aspirants who are watching, कुछ भी question हो जयदीप से, मेरे से, about whatever we talked about, or anything in general about CET, put it in the comments and we both will try to answer it.